So in this lecture we are going to discuss about the junction diodes. So before junction diode, we all know that for single isolated atoms, किसी single isolated atom के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जो डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी. So in case of solids, the atoms are, we know that they are closely packed, and suppose a solid contains 10⁻23 atoms per cubic centimeter. So क्योंकि अगर सॉलिड में हमारे जो एटम्स है वो दे आर क्लोजली पैक्ड, सो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होंगे, बट जो उनकी एनर्जी की रेंज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी rather than single energy, because solid की केस में they will be closely packed. So instead of single energy they will have different range of energy. also उस range of energy को हम क्या बोलते हैं, energy band. So therefore, सो ये जो एनर्जी बैंड होंगे सोलर के केस में, दे आर आइदर पार्टली फिल्ड और completely filled, or either they are empty. So depending upon their energy, so energy band of solid splits into two bands. First is your conduction band. This is the band of lowest energy in which all the electrons may be filled, and another band of highest energy which is known as your conduction band. This may be completely empty, and there is a separation between this band and this band. Separation between this band is known as your बैंड गैप, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप. इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप और बैंड गैप. बिकॉज दिस इज द बैंड ऑफ हाई लोएस्ट एनर्जी, इस बैंड की लोएस्ट एनर्जी होगी और इस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी होगी, कंडक्शन बैंड की. So depending upon these two bands, the solids are classified into three categories. First is conductor, insulator, and semiconductor. So conductor की केस में क्या होगा, this valence band will be completely filled, and this can also be partly filled or completely filled, or they will overlap with each other in case of conductor. सो अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो ये बैलेंस बैंड क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगा, एंड दिस इज कम्प्लीटली एम्प्टी, एंड देयर इज़ अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड. इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर. बट देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज़ नोन एज योर सेमीकंडक्टर. इस सेमीकंडक्टर के केस में होगा ये जो एनर्जी गैप होगा विच इज़ ये होगा, ये इंसुलेटर से कम होगा. सो दिस गैप बैंड गैप इज स्मॉलर देन योर इंसुलेटर्स. सो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए हमारा, फॉर सिलिकॉन दिस बैंड गैप ई जी इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड जर्मेनियम के लिए क्या होगा, जर्मेनियम के लिए बैंड गैप होगा approximately 0.7 electron volt. So for at 0 degree Kelvin, semiconductor behaves as, these semiconductor will behave as insulator, because 0 degree Kelvin पे क्या होगा, ये बैलेंस बैंड क्या होगा, that will be completely filled, and there is no electron in this conduction band, and there is some energy gap between this. So एक बात इम्पोर्टेंट बात ये भी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे होंगे, और यहाँ इलेक्ट्रिक केस में यहाँ पे दिस कैन बी आल्सो पार्टली फिल्ड. सो बट देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस region, this forbidden region, this energy gap, because there are no energy, there are no allowed energy levels in this energy gaps, therefore no electrons can stay in this energy gap. So we can say that the electrons, these semiconductor behaves differently according to inductor and insulator, because their conductivity or resistivity lies between the conductor and insulators. So there are two types of your conductors. First is your semiconductors. Semiconductors are of two types, that is your intrinsic, and this is extrinsic. So extrinsic semiconductors, fourth
ग्रुप के एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल के, लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। और ये जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, इंस्टेंट सेमीकंडक्टर, दे आर एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ग्रुप लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड these semiconductors have four electrons in their valence shell, बिकॉज फोर्थ ग्रुप के हैं तो फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम्स फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड विद फोर एडजॉइनिंग एटम। अगर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का जो एक एटम है वो हर फोर्थ एटम है वो क्या करेगा, एडजेसेंट जो इसके जर्मेनियम के सॉलिड में एडजेसेंट एटम होंगे उनके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही सिलिकॉन का। सो एट 0 डिग्री केल्विन देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। 0 डिग्री केल्विन में क्या होगा, देर विल बी नो इलेक्ट्रॉन, देर फोर दीज सुपर कंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। But at your room temperature, these due to the thermal motion of those electrons, these thermal motion provides sufficient energy for these valence electron, so therefore they behave, there is some conductivity in semiconductors at room temperature, but at the absolute zero temperature they behave as your insulator. So नेक्स्ट योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनको हम क्या कर देंगे, इसमें इम्प्यूरिटीज ऐड कर देंगे, बिकॉज इम्प्यूरिटीज प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज नोन एज योर डोपिंग, सो देयरफॉर we add impurities to these atoms, and impurities depending upon the impurities, if impurities are from third or fourth group of third group of your periodic table, then these intrinsic semiconductors are known as your p types extrinsic semiconductor, and when impurities are of your fifth group of table of periodic table, then these semiconductors are known as your p type semiconductors. So in case of p type semiconductors, the holes are majority carriers and electrons are minority carriers, but in case of n types semiconductors, electrons outnumbers the holes, so electrons are majority carriers and holes are minority carriers. So thus we have discussed that extrinsic semiconductors are of two types, that is p type semiconductors and n type semiconductors. p type में हम क्या करेंगे, जो हमारे फोर्थ ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं सेमीकंडक्टर्स है, इसमें हम क्या कर देंगे, जो पीरियोडिक टेबल हमारे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसको ऐड कर देंगे. सो देयरफॉर in this case holes are your majority charge carriers, and in n types of semiconductors we add the impurities of fifth group of element periodic tables. So thus here in case of n type semiconductors, electrons are your majority charge carriers. So now in next important thing in these semiconductors or your solids is known as your Fermi level. So Fermi levels जैसे मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्सप्लेन किया था कि Fermi level is that energy level up to which above which all the energy levels are empty and below which all the energy levels are filled. So that is the definition of your Fermi levels. So now in case of semiconductors, the Fermi level have a very great importance. So we know that all at the absolute zero temperature, at absolute zero temperature all the electrons are tightly held in the semiconductors, and they are a valence band, they are completely filled, and conduction band is completely empty. So because covalent band are very strong at absolute zero temperature, so there are no free electrons. Because tightly held होंगे, covalent electron strong होंगे, तो there are no free electrons at absolute zero temperature. So semiconductor कैसे behave करेगा, semiconductor will behave as a insulator. So this is the distribution of semiconductor at your absolute zero temperature. This is the valence band, this is conduction band, this is the energy gap between valence band and conduction band at absolute zero temperature. So all the states below this Fermi levels are filled, and above this all the states above this Fermi level are empty, and this is the band gap between the conduction band and valence. So thus absolute zero temperature, this is completely filled and this is completely empty, and there is large gap between them.
So thus probability of finding the electron in the conduction band and the hole in valence band is 0, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या फ्री जो हमारे मेजोरिटी के चार्जेस होंगे होल्स वो क्या होंगे, they will not be there. So therefore probability of finding them is 0 at absolute 0 temperature. So now this is the nature of Fermi distribution function at your absolute 0 temperature. But as long as the temperature increase, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड जो पहले बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे वो क्या होंगे, दे विल स्टार्ट्स ब्रेकिंग. सो सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द सेमीकंडक्टर ब्रेक ड्यू टू द थर्मी because the thermal energy supplied and free electrons can go from this balanced electron to conduction balanced band to conduction band. So thus in case this Fermi Dirac distribution function will not be 0. So thus this at your temperature this is was at absolute 0 temperature, this is at your 300 degree Kelvin. So therefore your Fermi distribution function is non-zero. So therefore the probability will be Fermi Dirac distribution function will be 0.5. This is multiplied between your conduction band and valence band. Therefore Fermi Dirac distribution will be 0.5. So thus I have told you that the Fermi distribution function is non-zero. Here this is non-zero and the probability of occupancy there decreases from NT. The nature of distribution function at room temperature is given is shown as by this line, because this is because electrons are electron hole are jumping from valence band to conduction band. So therefore probability is 0.5 at Fermi level. This is 0.5 at Fermi level. Hence the Fermi level for intrinsic semiconductor is near, thus in this case Fermi level is near the your midway between conduction band and valence band. You can say that midway between your energy gap. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो ये हमारा क्या एनर्जी गैप है इसके मिड वे में होगा, या ऐसे बोल सकते हैं हम बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मिड वे में होगा. सो दिस इज द नेचर ऑफ योर Fermi level in case of extrinsic semiconductor. So if we talk about your Fermi level in extrinsic semiconductor, तो उस केस में क्या होगा, हम मतलब सेमीकंडक्टर इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज डाल देंगे, डोनर इम्प्यूरिटीज और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज. तो क्या होगा, ये फर्मी लेवल क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा इम्प्यूरिटी के अकॉर्डिंग. सो लेट अस डिस्कस दैट. So now we will discuss the Fermi level in extrinsic semiconductor. So जब हम क्या करेंगे, जब हम सेमीकंडक्टर्स में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, इम्प्यूरिटी आइटम्स ऐड करते हैं, तो फर्मी लेवल क्या करता है, फर्मी लेवल्स चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है. फर्मी लेवल इम्प्यूरिटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. इम्प्यूरिटी बिकॉज इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होगी, इसमें डिस्टर्ब होगी. सो टू प्रिजर्व द चार्ज न्यूट्रलिटी फर्मी लेवल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ. सो in case of your n type semiconductors, the impurities are your electrons. So as the n types donor impurities are added to your crystals, so then if we assume that, अगर हम assume करें कि जो सारे डोनर्स एटम्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, तो डोनर इलेक्ट्रॉन्स will occupy the state near your conduction band. So they will occupy the state near the conduction band. So then small number of electrons from valence band are able to cross the band gap by thermal agitation. So therefore your Fermi level will become nearer to your conduction band. So because of this the number of holes of conduction band is decreased, because small number will atoms will cross from here to here. So therefore क्रॉस करके जाएंगे तो क्या होल्स वहाँ पे क्रिएट होंगे. अगर स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर से इधर जंप करेंगे तो क्या होगा, होल्स क्या होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे. सो सिंस वी नो दैट फर्मी लेवल इज द मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द अलाउड स्टेट विच इज एट
0.55 मिडिल में था 0.55. So therefore hence a Fermi level for n types of semiconductor is closer to your conduction band. So if doping is large, Fermi level may move to conduction band. अगर doping in large number of electrons are added to your crystals, therefore Fermi level will go up and it will be more closer to your conduction band. So when this occurs, the material is known as degenerate एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो ये तो हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए. बिकॉज इस केस में क्या होगा, फर्मी लेवल हमारा अब जितनी डोपिंग ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता जाएगा कंडक्शन बैंड की तरफ टू प्रिजर्व द चार्ज न्यूट्रलिटी. सो इफ़ वी टॉक अबाउट योर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, सो व्हेन एन एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज आर एडेड, एक्सेप्टर मीन्स क्या होगा, होल्स इसमें ऐड करेंगे. बिकॉज अगर होल्स इसमें ऐड करेंगे पी टाइप में क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे. सो इन केस योर पी टाइप सेमीकंडक्टर एज द एक्सेप्टर impurity is added, it also modified the energy level diagram. This is the energy level diagram of semiconductors. So therefore create the new energy levels which in the gap of ये जो हमारा बैलेंस बैंड के और के ऊपर और कंडक्शन बैंड के नीचे जो हमारा बैंड गैप होगा, इस केस में क्या होगा, न्यू एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएंगे. सो देयरफॉर द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इज लोकेटेड नियर द योर बैलेंस बैंड. ये उसका रिवर्स होगा इसका. सो देयरफॉर इफ डोपिंग इज वेरी वेरी लार्ज, सो देयरफॉर योर फर्मी लेवल विल मूव क्लोजर टू योर बैलेंस बैंड. And if this is very large, this Fermi level will move into your balance band. So in case this material is known as degenerate p type. So here this energy balance band, this Fermi level, this is your that is your acceptor donor impurity की energy level है. This is conduction band की energy है. In this case this is the energy of acceptor impurities, that is this is closer to your valence band. In case of n-type semiconductor, it was closer to your conduction band. So this is the main difference between your that is shifting of Fermi levels in semiconductors. n-type semiconductor में क्या हो जाएगा, conduction band की तरफ shift हो जाएगा because of donor impurities. And in case of p-type semiconductor, this Fermi level will shift to your valence band due to your acceptor impurity levels. तो क्या हो जाएगा, to preserve the charge neutrality, Fermi level will adjust accordingly. एक और यहाँ पे क्या है, एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, और एडिशनल थर्मल एनर्जी इंक्रीज मिलेगी. एडिशनल थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स क्रिएट होंगे. सो उसकी वजह से क्या होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे क्या होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे क्या होगा, होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सो उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी. सो अल्टीमेटली टेम्परेचर अगर टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड और ज़्यादा इंक्रीज होंगे. सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे, अगर कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल क्या होगा, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, दे विल बी बिकम्स इक्वल. देयरफॉर एक्सट्रिंसिक सुपरकंडक्टर बिकम्स एसेंशियली एक्सट्रिंसिक सुपरकंडक्टर. सो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज होता जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सो एट सम लेवल योर एक्सट्रिंसिक सुपरकंडक्टर विल changes into your intrinsic semiconductors. Therefore, this is the effect of temperatures in case of extrinsic semiconductors.